Namaste and good evening. The symposium is being held to mark the 162nd birth anniversary of Rabindranath Tagore. And we have with us some of the best minds who have not only translated but creatively thinking of Rabindranath. We've seen Ejaz Sahab, Professor H.S. Shivaprakash ji, Professor Malashri Lal ji, Professor Mohanjit ji, Professor Prayag Shukla ji, and Professor Radha Chakravarti ji. At the outset, I request Dr. K. Srinivas Rao ji, Secretary Sahitya Akademi, to felicitate and welcome each of the participants. Professor Malashri Lal ji. Respected Sri Prayag Shukla ji. Sri Faiz Singh Ejaz Sahab. And Mohanjit ji. Professor H.S. Shivaprakash ji. And Professor Radha Chakravarti ji. Reba Somji was to come and attend and participate, but unfortunately she couldn't make it. I request Dr. Rao ji now to please deliver welcome address. Namaskar and good evening to all of you. Professor Malashri Lal ji, eminent scholar and also the convener of Sahitya Akademi's English Advisory Board. Professor H.S. Shivaprakash ji, eminent poet, playwright and critic. Dr. Prayag Shukla ji, eminent poet, translator. Professor Radha Chakravarti ji, eminent scholar. Dr. F.S. Ejaz ji, eminent Urdu writer and also translator. Dr. Mohanjit ji, eminent Punjabi writer and scholar. Professor Mrinal Miri ji, Sri Chandravan Khyal Sahab, who is also a convener of Sahitya Akademi's Urdu Advisory Board, and friends. I am glad to welcome all of you for this program to commemorate 162nd birthday anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. The topic of discussion for today's program is not only interesting but a very timely one. And I thank all the participants for being here at such a short notice. Gurudev is not a distinguished poet or playwright or critic or fiction writer, etc., but all rolled into one. He was a rare polymathic visionary who saw the things to come in some cases by many decades. That way, he was very similar to Sri Aurobindo, another Bengali who scaled the peaks of spirituality, expressed even those emotions and thoughts that sit on the fence of the brain and refused to yield to expressions. That was common to both of them. Today's topic is not only about Gurudev and his verse, but also about celebrating Tagore in translations. Gitanjali would come to everyone's mind when one talks about translation of Tagore, and that is true because of over the past century, there is hardly any nation on earth where Gitanjali has not found a presence. However, I would like to share only two personal perspectives that may be right or wrong while welcoming all of you. The first is Gora. Sujit Mukherjee's masterful translation of the novel opened the gate for translations of this classic in many Indian languages. Of course, Akademi has brought out Gora in many languages, but I am talking about translations in all the languages by many publishers. But Sujita's contribution was immense and was probably not felt at the time when it came out. Probably his great translation was a tribute to
what Meenakshi later wrote about in early Indian novels. One may even wonder how far this is true, and I would say Gora is one of the best-selling books in 2023, also in many Indian languages for Sahitya Akademi. One can easily relate if the languages in question are Cognate or even Hindi, but Gora is setting stands on file 113 years after its publication. I would like to attribute to wonderful translations by people who had first-hand knowledge of Bengali and target language, for example, Tana Kumaraswamy and Tana Senapati in Tamil, Vivekananda in Marathi, and so on. The novel, apart from debate between politics and religion, also had many universal elements and themes that are very relevant to India, such as liberation, universalism, brotherhood, gender, feminism, caste, class, tradition versus modernity, urban elite versus rural peasants, colonial rule and nationalism. This is where the appreciation for Sujitda's translation grows bigger. Despite the target language being English, he was able to bring out all these themes and elements intact. Another least appreciated translated work from Gurudev's rich corpus is the translation of Chitrangada. The story and the plot were not new when Tagore penned it 131 years ago, and they were around for a long time from Manipur to Kerala and Gujarat. For those who don't know, the story of Chitrangada was adapted for use in Veedi Natakam in Andhra Pradesh and other areas, Tirukuttu and Chakyar Kuttu down south for centuries before Tagore wrote the play. Just as every adaptation before him presented multiple dimensions according to the need of the situation, Gurudev expanded the horizon in his one-act play, Chitra, that came out 30 years later through the dialogue among Chitrangada, Madana and Vasanta. For such a short play and story that has been around for 100 years or so in many languages, Tagore's treatment was fresh and goes into the questions of what is love, what is beauty, meaning of life, and whether ends justify means and so on, though in a very subtle manner. Chitrangada is something that people don't address in a major way when the topic is the translations of Rabindranath Tagore. Of course, some have addressed it, but not a bigger level that is deserved by the translations into other languages. I honestly believe wider discussions on translations of all the works of Tagore would lead to enhanced understanding how Gurudev's works are universal, relevant to all times, and better awareness of his visionary approach irrespective of the work at hand, be it poetry or fiction or plays. I am sure all the experts in this program will bring out multiple dimensions and perspectives of translations of the works of Rabindranath Tagore. With these few words, I am glad to welcome all of you once again. Thank you all. Thank you very much, sir. Now I request Malashri Lalji to open this. Professor Malashri Lalji has authored and edited 16 books, including the most recent, co-authored with Namita Gokhleji, Betrayed by Hope, a play on the life of Michael Madhusudan Dutt, which won the Kalinga Award for Fiction in 2021. Among her books are The Law of the Threshold, Women Writers in Indian English, In Search of Sita, Revisiting Mythology, Tagore and the Feminine, A Journey in Translations, and Finding Radha, The Quest for Love. Her specialization is in literature and gender studies. Her poems and stories have been published in journals and anthologies. She has received research fellowships at Harvard University, Bellagio, and Newcastle.
Malashri Lalji is a member of the General Council of the Sahitya Akademi and currently convenes Sahitya Akademi's Board for English Language. Professor Malashri Lalji. Thank you, Dr. Rao, for that very insightful opening remarks. And thank you, Krishna ji, for that very generous introduction. I request Krishna ji to introduce all our eminent panelists and then we can take on the discussion. Shri Faiz Singh Ejaz Sahab is an eminent poet, fiction writer, critic and translator in Urdu. He has also written travelogues. He is editor of monthly Insha, which is longest serving Urdu periodical. So far, he has published 25 books. He has also written monograph on Niyaz Fatehpuri, biography of Subhash Chandra Bose in translation, Khwabon Ke Asrar, Thoda Sa Tagore, and translated collection of world poems, Monakaz. Europe Ka Safar, Syria Mein 10 Roz, and Chin Yatra are his 3 travelogues. He has honored with several awards, including Sahitya Akademi's Translation Prize in 2011, 23rd Alami Farogh-e-Urdu Adab Award, and award for monthly Insha by Delhi Public Library, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi. He is currently a member of Sahitya Akademi's Urdu Advisory Board. Then we have Professor H.S. Shivaprakash, an eminent Kannada poet and playwright. He writes in English as well. He is the author of 6 books of poems, 9 plays, 2 books of criticism, and also edited several works. Many of his articles, both in Kannada and English, published in different journals around the country. He was the editor of prestigious literary bi-monthly journal of Sahitya Akademi, Indian Literature. He is the recipient of Sahitya Akademi Award, Sangeet Natak Akademi Award, Karnataka Nataka Akademi Award, Karnataka Sahitya Akademi Best Book Prize for 4 times, Karnataka Rajyotsav Award and Fellowship from Ministry of Human Resource Development for Literature. He has also directed several plays in English, Urdu and Hindustani. Dr. Mohanjit ji is an eminent Punjabi poet and prose writer. He has 26 published books to his credit. He is the recipient of Nanak Singh Yadgari Puraskar, Best Poetry Award, Hashim Shah Yadgari Puraskar, Niranjan Singh Noor Puraskar, Kalam Award, Shiromani Kavi, Param Sahitya Satkar Samman, and Rachna Samagar Award, among others. Respected Sri Prayag Shuklaji, an eminent poet, art critic, fiction writer, translator, editor, and has 50 books to his credit. Got Translation Prize of Sahitya Akademi for his translation of Bankim Chandra Chatterjee's articles from original Bengali into Hindi. He translated Rabindranath Tagore's Gitanjali and about 300 songs from his collected works. He has also translated Jivanananda Das and Shankh Ghosh into Hindi. He is the former editor of Kalpana, Rang Prasanna, Sangana, and Lalit Kala Akademi's journal Samakalin Kala. Earlier, he was with the Times of India group of publications from 1969 to 1998. Then Professor Radha Chakravarti ji, who is a writer, critic and translator in English. Her books include The Essential Tagore, nominated book of the year 2011 by Martha Nussbaum, Mahashrita Devi, writer, activist, visionary, and feminism and contemporary women writers, and novelist Tagore. She has translated Tagore's Gora, Chokher Pali, Boyhood Days, Farewell Song, 4 chapters, and The Land of Cards, Bankim Chandra Chatterjee's Kapal Kundala, Mahashrita Devi's Our Shanti Niketan, and In the Name of the Mother, nominated for the Crossword Translation Award in 2004. I
request Professor Malashri Lalji now to kindly open the symposium. Thank you, Krishna ji. As is evident to all of us, we have wonderful speakers, deeply evident and steeped in their own language and equally conversant with the issues and challenges of translation from various languages. And what subject better than Tagore, and especially today on his birth anniversary, when we should look upon this subject with insight and with thoughtfulness. So Tagore, as his birthdays came along every year, would occasionally write poems on the occasion, on his birthday. And one of the poems, which is called Aaj Momo Janmodin, today is my birthday, is a particular favorite that I have. There's several such poems, but this one in particular, because as he says, the opening line is Aaj Momo Janmodin, today is my birthday. And then he goes on to say that the birthday is also like a card towards the onward journey and towards death. But that is not something to be depressed about, because it's only like an old garland that is being replaced by a new one. And he uses the beautiful words like Jirno Malakhani, which means some old garland which is just torn apart. And that can of course be cast away. And instead of that, we should be looking for a Nobo Shutre Gatha, something that is Pirona jisko bolte hain, the fresh garland that is threaded anew. So it's on that note of celebrating Tagore on his birthday that we have this session. I will request the participants to present from their viewpoint what they think about the subject of Tagore in translations, and let us begin with Faisine Ejazza. And I request each of the participants to restrict themselves to about 10 to 12 minutes if possible, because then we can have our wonderful audience members here an opportunity to interact with the speakers. Over to you. Professor Malashri Lalji, Dr. Rao, Shiv Prakash ji, Radha Chakravarti ji, चंद्रभान ख्याल साहब, साथी साहब, मैं साहित्य अकादमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज टैगोर के 162वें जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया, उसका हिस्सा मुझे भी बनाने का मौका मिला। और उससे बढ़कर ज़रूरी और अहम बात यह है कि टैगोर के ट्रांसलेटर्स को एक मौका पहली बार मिल रहा है, कहीं नहीं मिला, हमारे कलकत्ते में नहीं मिला, कि टैगोर को ट्रांसलेशन में सेलिब्रेट करें। और इस तरह से मुझे लगता है कि टैगोर को नहीं बल्कि हमें भी सेलिब्रेट किया जाए। खासतौर पर ये कंसेप्ट बहुत नोवेल, अगर कुछ और भी इसके लिए वक्त मिलता और डेलिब्रेशन के लिए भी अगर कुछ वक्त मिलता, लेकिन वक्त तो मौजूद है, वक्त किसी का होता नहीं है। और आपने बहुत खूबसूरत बात की, मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वक्त में इस जो भी कुछ पेश करना है वो किया जाए। मैं कम से कम करूँगा। बहुत सारी बातें तो लोग टैगोर के बारे में जानते ही हैं, तो यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन के प्रोसेस में और ट्रांसलेशन में मुझे अपने आप को लिमिटेड और महदूद रखना है। मैं अपने तजुर्बे के बारे में ट्रांसलेशन को मैंने किए किए, लेकिन टैगोर ने ये कहा था कि मेरे बाद अगर मेरी कोई और चीज़ नहीं भी बाकी रहेगी तो मैं अपने गीतों में जिंदा रहूँगा। तो खुद टैगोर ने अपने गीतों को सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर रखा है कि वो इन गीतों की वजह से अमर रहेंगे। और इसमें कोई शक नहीं, आज मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन बंगाल में आप जानते हैं कि आज कितने गाने गाए जा रहे होंगे। टैगोर वाहिद और इंडिया का और दुनिया में भी उन लोगों में से एक है जब अकेले शायर और अकेले फिक्शन राइटर के तौर पर नहीं आता। टैगोर जब भी आता है वो अपने अर्थलीनेस के साथ, ज़मीन से जुड़े हुए रिश्तों के साथ, प्रकृति, प्रेम, विविधता,
स्वदेश, इन चीज़ों के साथ मिलकर उनकी हर चीज़ सामने आती है और पेंटिंग्स भी उसमें है। तो टैगोर के बारे में बात करते हुए हमें उनको, वो कई खानों में बैठे हुए थे, लेकिन हम जब बात करेंगे तो किसी एक खाने की भी बात कर पाए तो बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी। मैंने गीतांजलि का ट्रांसलेशन तो है, दूसरी चीज़ों का भी है, लेकिन गीत का ट्रांसलेशन करना दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रांसलेशन है। आप पोएम को कर सकते हैं, नज़म कर सकते हैं, गीत का ट्रांसलेशन कर पाना ये बहुत मुश्किल है। अगर ये मुश्किल नहीं होता तो टैगोर ने 2500 गीत अभी तक लिखे हैं। 2500 में से 100 गीतों का या 10 गीतों का भी गीत में ट्रांसलेशन नहीं हुआ, हमारे ज़बान में तो नहीं हुआ। तो मुझे ये बड़ी बेचैनी थी। मैं खुद कुछ गीत भी लिखता हूँ और शायरी भी करता हूँ, तो मैंने अपनी मेहनत को ऊपर वाले से दुआ मांगी कि मैं कुछ गीतों को रविंद्र संगीत से उर्दू में रविंद्र संगीत में पहली बार मैंने ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। और मैं बहुत मुश्किल और कई साल के बाद सिर्फ 20 ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। 20 में से 18 जो है वो टैगोर की जो मीटर्स हैं मोर और लेस उन तक है। दो में क्योंकि ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो पॉलिटिक्स सॉन्ग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। कभी कभी लिरिकल कंटेंट उसमें आते ही आता है। यहाँ तक के जो लोग टैगोरियन हैं वो जानते हैं कि टैगोर के बारे में भी कहीं कहीं उनकी लय उखड़ती है। इट इज़ वेरी नेचुरल, सॉन्ग्स में ये ज़रूरी है। मैं उनमें से आपने राव साहब ने कहा कि क्रिएटिव डायमेंशन भी इसको देना है, इसीलिए मैंने इस चीज़ का सिलेक्शन किया है। मैं 10 मिनट में आपने जो चाहा वो ऐसे ही था ये इसका। तो उनके जो गीत हैं मुख्य तौर पर पूजा, प्रकृति यानी फितरत, स्वदेश यानी मादरी वतन, प्रेम और विविधता, ये ब्रॉडली इनमें डिवाइडेड है। उनमें से मैं आपको छोटे छोटे से गीतों के टुकड़े पेश करूँगा क्योंकि ये काम पहले ही बार हुआ है। मुझे इतना मौका आप दें, अगर आप उनका एक गीत है और ये पूजा सीरीज में सीरियल नंबर 5 है। इसको मैंने जादू साहब जो कनाडा में है उन्होंने बंगला से इंग्लिश में और रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया था। तो मैंने उसमें 100 गीत मैंने उसमें से ये लिया। बंगला मुखड़ा मुझे इसलिए यहाँ पढ़ना है कि यही सबसे मुश्किल काम है और पहली बार हुआ है। तो उनके मीटर्स को फॉलो कीजिएगा, आप फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। अभी जपन तार द्वारे क्रिश्चन इते जाए, अमी जपन तार द्वारे क्रिश्चन इते जाए तपन जहाँ पाए शेजे अमी हाराए भाई बारे तीनी जपन क्रिश्चन इते आशन अमर द्वारे। इसको मैंने 15 मीटर छोड़ा। उसी मीटर को मैं उर्दू में मैंने इसको चेंज किया है और पूरे फॉर्मेट में है। मैं जब भिक्षा लेने जाऊँ उसके द्वारे, भिक्षा लेने जाऊँ उसके द्वारा जो कुछ उससे पाऊँ वो बैठो हर बार। मुझसे लेने भीख अगर वो मेरे द्वारे आए तब क्या कुछ हो जाए। क्या बात। द्वार के ताला मन के भीतर देखो गुप्त रतन, तोड़ के ताला मन के भीतर देखो गुप्त रतन, जिन्हें कभी न खोए मन। और जब उसके द्वारे चलकर पूछा मांगने आए तब वो इस धरती के ऊपर उजियारा दिखाए। सांझ भय जब हाथ उठाकर सबको दे वो दान, सांझ भय जब हाथ उठाकर सबको दे वो दान, तब होता ये ज्ञान अंधियारे में फूट उठा है उसके प्राण का धन। अपने मुकुट पर पहने हुए है अपने ही रत्न, मैं जब भिक्षा लेने जाऊँ उसके एक बहुत छोटा सा गीत सिर्फ 4 लाइन होता है। आपकी वजह से आपके डर तो
पहले बंगला मुखड़ा पढ़ता हूँ। दुखे तिमिरे जुदी ज्वाले तवो मंगलालो भवताई हो, और उसका इंग्लिश है should in the darkness of my grief shine your light hello let it be। अब ये मेरा तर्जुमा है, उसी वजन में उसी मीटर में है। अगर मेरे गम के अंधेरे में हो जाए मध्यम सभी एक तेरा उजाला। क्या बात। अगर मेरे गम के अंधेरे में हो जाए मध्यम सभी एक तेरा उजाला तो हो जाए वो, तो बताइए हो। अगर मौत पहुंचा दे मुझको वहां पर जहां तेरा घर है सदा रहने वाला तो हो जाए। अगर तेरी पूजा के जलते दिए में कोई शोला उनका भड़क उठे मेरा तो हो जाए। अगर मेरे आंसू भरी आंखों में एक मोहब्बत भरा तेरा चमके इशारा तो हो जाए वो। अगर मेरे रंग के अंधेरे में हो जाए मध्यम सभी तेरा। एक मैंने कहा कि नज़्म का तर्जुमा करना उतना मुश्किल नहीं जितना गीत का। एक गीत जो टैगोर का भी गीत कम है और नज़्म दे रहा है, मैंने नज़्म का नज़्म में उसी मीटर में तर्जुमा किया है। इसका मुखड़ा है जय राते मोर द्वारा गुली भांग न छोड़े जानी ना तुम्हें बोले अमर भरे। जिस रात को तूफान ने तोड़ा था मेरा दर, तूफान आ रहा, जिस रात को तूफान ने तोड़ा था मेरा दर मालूम नहीं था कि तू आया था मेरे घर। जो कुछ था मेरे चारों तरफ हो गया काला और बुझ गया जलते हुए दीपक का उजाला। कब हाथ बढ़ा सूर्य फलक किस लिए मेरा अंधियारे में जैसे हो कोई ख्वाब सा देखा। तूफान तेरी जीत का ऐलान था क्या था, तूफान तेरी जीत का ऐलान था क्या था। जब सुबह हो गई तब तू मेरे दर पर खड़ा था, घर था मेरा खाली मेरी हस्ती भी थी खाली। उस वक्त नजर आई तेरी शान मेरा है। जिस रात को तूफान ने तोड़ा था। अब मैं प्रकृति की सीरीज से एक अच्छी सुनाता रहूँगा। छोटे से 6-7 महीनों का है, प्रकृति है, है मंगला में बंधु रहो साथे आज ये सगुन सगुन खाते। अब देखिए वही मीटर रहता है। बंधु रहो साथ है घनघोर सुबह सावन के लम्हात है। क्या क्या मेरे ख्वाब थे यार बिना रात है। बंधु समय बेकार बीता जाए है, बादल व्याकुल बेकरार हुआ जाए है। मेरे दिल से करो बात रखो हाथ पर हाथ रे बंधु रहो साथ। मंगला है प्रकृति सीरीज का है। जेते दो बेला जा रहा, जेते दो बेला जा रहा, तुम्हें जे रोना तुम्हें जे जाने दो जो जाए यारा। तुमने ही जाना तुमने ना जाना, मेरा सावन गीत हुआ नहीं है सावन। कुटिया कुटिया बंद द्वार रात अकेली अंधकार, जंगल कांपे उस किनारे और हवा बेचैन यार। दीप है बुझा बुझा रखो, हाथ से हाथ छुआ रखो, कंगन बजे हाथों के ताल से ताल मिला रखो। जिस तरह बेचैन हो नदी किनारा, पानी में मिल जाए जैसे पानी सारा, झड़झड़ झड़ती जाए जैसे सावन की धारा। जाने दो जो जाए यारा, तुम नहीं जाना तुम भी न जाना, मेरा सावन गीत हुआ नहीं है बहुत अच्छा गाते हैं। इसका सिर्फ मैं मुखड़ा सुनाऊंगा क्योंकि आप लोग सुने हुए हैं, अगर वो सुन रहे हो बनारस को सुन रहे हो। स्वदेश है और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं किसी भी पार्टी के वो जब सिचुएशन अपने फेवर में लाने के लिए जब मजबूर हो जाते हैं तो किस मुखड़ा होता है।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুই একলা चल जाओगे। तेरे वजन वही है, इस वजन में ये उर्दू का आपने नहीं पढ़ा होगा, तेरी आवाज पर जो कोई ना आए तो तू तन्हा चल भाई, तन्हा चल भाई। कोई अगर बात ना करे, अरे अरे वो अब भागे, हर कोई मुंह फेरा ले, हर कोई करे भाई, ऐसे में प्राण खोल, अरे मुंह खोल, तेरे मन में जो है तन्हा बोल भाई, तेरी आवाज पर जो कोई मैं आपको मोहब्बत के कुछ गीत सुनाऊंगा। अच्छा, सत्यजीत राय की फिल्म से हमारे अंदर बहुत हमारे दिलों में बैठे हुए रहता है ये गीत। हमें चीनी को चीनी हमारे और तुम्हें ठाकुर सिंदूर पाए, सिंदूर लफ्ज़ को आप दरिया समझिए, समुद्र। इंग्लिश में है I know you already from distant land. You live beyond the sea, already from distant land. उसी वजन में है, मैं जानूं वो विदेश में, हम चीनी को चीनी तुम्हारे वो विदेश में, अब मैं जानूं तुझे वो विदेश में, रहती नदी के पार तू है वो विदेश में। क्या लफ्ज़ है आगे आप सुनिए। तुझे सुबह मैंने देखा जब रुत खजा की थी, तुझे देखा मेरे शब्द में थी वो रात मत भरी, तुझे देखा मन में अपने मैंने वो विदेश में, तूने जो भी गुनगुनाए, तूने जो भी गाए गीत, मैंने आसमां से कान लगाकर सुने वो गीत, मैंने सब दी है जान तुझे वो विदेश में। मैं जानूं तुझे वो विदेश में। आखिरी बंद है, सारी जमीन घूम ली तब आया हूँ यहाँ। देखिए ये बंद जो है विक्टोरिया ओकाम्पो की तरफ जा रहा है, अर्जेंटीना की तरफ, जो उनकी में हुआ थी, क्योंकि ये लफ्ज़ वही बता रहे हैं, लिखा नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सारी जमीन घूम ली तब आया हूँ यहाँ अर्जेंटीना। मेरे लिए ये देश नया है, नया जहां, मेहमान तेरे द्वार पे है तो विदेश नहीं, मैं जानूं तुझे तो विदेश। देवसी की 4 पंक्तियां खाली हैं, 4 मिसरों में ये है, ये भी प्रेम का है। हमें हृदय उठा बोलते व्याकुल सुधाइला ना कहना, क्षेत्र वेलना जा रहे सौकलम ए प्राण मन देहा। हम दिल की बातें कहने को बेचैन, किसी ने ना पूछा। हम दिल की बातें कहने को बेचैन, किसी ने ना पूछा। वो तो आया नहीं, तन मन जिसको छोड़ दिया। क्या वो हमको राह में ढूंढे, क्या गीत गुजरा के गाए, हम जिसकी बंसी सुनकर घर अपना छोड़ निकला। मोहब्बत का ही 1-2 गीत और सुनाऊंगा बस। हमारे बंगाल में जलस भारतीय तो उन्होंने गीतों का हर 5-6 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। तो उनकी महफिल में वो मेरी दावत पर आई थी, तो इसको सुनकर बहुत अद्भुत हो गई। और मैंने पहली बार मिला था उनसे, वो मेरे कंधे पर हाथ रखा, सर पर हाथ रखा। कांदाले तुम्हें मोरे भालो भाषा ही गाए, निबिड़ बैजनाथ है पुलों लागे गाए। इसको खासतौर पर मेरे दिल की आरज़ू है कि आप सब सुन लें, मोहब्बत से सुने, मोहब्बत के कानों से सुने। तूने ऐसी उल्फत जताई मुझको रुला दिया, तूने ऐसी उल्फत जताई मुझको रुला दिया। मेरा गम गहरा और खुशी लगे, मेरी उल्फत तुझको भली लगे। तेरी चाहत के संग दूर देश में जा पहुँचूँ, मेरे पाँव चाहे दुख जाए, बजे मेरे मन में बांसुरी, बहे नैनों से धारा नीर की। इस दुख में बेहद मिठास है, इस दुख में बेहद मिठास है। मेरा सब कुछ तेरे पास है, तूने सब कुछ मेरा छीन लिया, अब कुछ भी कहाँ मेरे पास है। मैं पूरी तरह तेरे बस में हूँ, ये कैसे पेशो पस में हूँ।
आजाद न होना चाहे मन, है जाने कैसा ये बंधन, तूने किस बंधन में बांध लिया, तूने ऐसी चलपट जताई, तुझको बुला लिया। बहुत शुक्रिया, it was wonderful translations and reading. मोहब्बत से तो बात कभी खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, तो मैं प्रोफेसर शिव प्रकाश से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें टैगोर और ट्रांसलेशन के बारे में बताएं। Thank you, Rajiv, for having me here. These people wonderful translations by माइक और आगे करिए, वो खुद आगे listening to wonderful translations by Yasa philosophers. I wish there could have been some more in Canada who could understand Bengali and translate giving to Canada as wonderfully done. I wanted to do quite a bit to talk about different translations of those fiction, etc. Rauji said that after Sujita's translation, Gora's translation is much shorter. Long before that, one woman translator from Mysore, Sahitya, who knew Bengali, translated Gora and Naukada. They were wonderful translations. And I would like to begin with an anecdote which talks about the special relationship Tagore had with them. One of our great writers, Masti Venkatesh, in those days, all our great writers, everybody speaking of Tagore, Gurudev, Kuvempu, Rabindra, Masti Venkatesh, everybody. Those days, Masti Venkatesh went to Tagore's Jalasandha to meet him, and Tagore was deeply moved. And that's when he composed one of his most famous songs. And one of Tagore's most famous songs, which is that Ananda Loke, Ananda Aloke, Virado Shanta Sundar. You know where he got that name from? He went to Mysore, and there was a big tragic song of the king of Mysore. That's he got the name. I'm told in Gujarati, the entire verse of Tagore had been translated, because the father of Gujarati modernism, Suresh Joshi, was a great lover of Tagore's works, and he saw it in all the verses translated. But that kind of thing has not happened. I think Sahitya Akademi, somebody should see to it, Tagore's entire poem is translated into all Indian. Never mind. There are two kinds of translations. I'll confine myself now. Of course, many of the plays have been translated, fairly well translated. But there is one special translation of Chitra, which Raji mentioned. Two translations. Masti Venkatesh has done a literal translation of Chitra. The great poet Kuvempu has done an expanded kind of translation of Chitra. It's called Chitra. And Tagore's Chitra is brief and lyrical, whereas Kuvempu was a great poet. He has stretched out the descriptions of nature to much longer passages, and he has brought his own, the immense beauty of his region, Malnad, into that work. So it's a kind of transcreation that Kuvempu has done. We have a translation by Masti Venkatesh and a translation by Kuvempu. And in fact, when we talk about Tagore's translation, we should limit ourselves to linguistic translations. We should also look at
translation into other genres, what Roman Nicholson would call intersemiotic translation to cinema, theatre, etc. Then another influence that Tagore had in all over like this, his events. Even those were not translated. Somehow, the breath, that spirit of Tagore is there in the work, like all of it was Bindre, Gunhu, and Masvin, Tashenka, and Gorecha. I was instead of going adding nausea like this, I wanted to confine to one poem, which is the textbook of all of us know this, where the mind is without wherever the head is. When it comes to the translation of Tagore's poetry into Kannada, most of them have been done from English, which means the translation are very well. In fact, when I was a student in English MA, English Gita was a textbook, and our professor was asking us, that's a great one. I said, what's so great? So sounds so happening. And I was wondering, how could this be a great one? When somebody is reading Bengali, there was great difficulty in Bangalore. Those days, very few Bengalis in Bangalore. I learned a little bit of Bengali to be able to read the text in the original. Then I could see what Tagore is. Because in English, they put in the sense, but Tagore, sense without sound, is not. For example, this famous poem, like Amshe Jemon Manoshe Jati, Femani Sara Digoshara, Hekti Noshkar, Tagore translates Hansa as spring. The connotation is complete. So then I realize how important it is to read Tagore in the original. Because the more I read Tagore, I realize that what he was trying to do is to reconcile Kalidasa's kind of creative genius, the power to create new meanings and metaphors, with Jayadeva's kind of word magic. This is also known with the other poets, Now, when I looked at different translations, I got hold of and one important translation is there in Kannada. The great poet Bindre, who according to me is a much greater translator than a poet, he translated from Marathi, Sanskrit, so many languages, English and so on. He didn't know Bengali, but he worked with a Bengali knowing mediocre poet called Narayan Singham. Narayan Singham knew Bengali, poetry. So when he translates Tagore, he is able to recreate those very rhythms. For example, this famous film, patriotic poem, Ee Bharatir Mahamanaveer Shavarati. Nanna Chittani Punya Tirthali Mella Neelu Elu Bharatadali Mahamanava Sagarati Vratu. Illi Nintu Nara Devategadarge Neevu Tervutoru. The same. So, most often, because both Kannada and Bengali have a lot of Sanskrit words in common, Tagore has kept the same words in this translation. Sorry, Bindre has kept the same words in this translation. But this Vedaman is without fear, Chitta Jato Prayoshumu, that poem, has been the waterloo in the translators. I tell you why. And I have some thoughts about it. A lot of people think this is a patriotic poem. And as Buddhadev Bose in his book on Tagore points out, Tagore's patriotism is very different from normal patriotism. Is always for one's own country and against it. But Tagore's patriotism was inclusive. And some people, there is one translator who knows Bengali, translator from Bengali, gets the words, the same verse that is into Kannada. But the meaning is lost. And others try to replace those words with Kannada words that doesn't work. So how to
challenge to the translator. A.K. Ramanujan, in his introduction to speaking of Shiva, he said for translation, the word giveth life and the spirit killeth. But in most of Tagore's translations, the word does not give life and the spirit is not. So it's important to get both spirits and the word into the translation. I requested Bhavan to read I got somebody to write it for me in Devanagari, but later she reads it. Then I read 2 Kannada translations, 3 Kannada translations, and 1 Gujarati translation. And I have concluded that. I would have loved to talk about in translation that was from Chitranada, the Buddhist film, Dagda into Kanela's with Manipuri production of the play. There was no time, so I can find myself in this particular. I hope this works. Can you hear me? Yeah. So I read the formula as requested. Chitta jetha bhay shunno, uchcho jetha shir, gyan jetha mukto, jetha grihe prachir apon prangona kale divosha sharbori, poshudhare rakhe nai khondo kudro kori, jetha bakho hridoye uchcho mukhote uchcho shirothe, jetha nirbariho srote deshe deshe dishe dishe kormo dhara dhai, অজস্র সহস্র বিধম চরিতার্থায় যেটা তুচ্ছ আচারের মধু বালু রাশি বিচারে স্রোতপথ ফেলে নাই রাশি পৌরিশেরে করেনি শতথা নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি দিত ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। Not a well-known translator, Guru Bengali. Chittavetta Vayashunya Uchchavelli Shira, Dana Mukta Videkelli Draha Prachira, Tanna Mane Yangaradi Divasa Rajani, Divasudenu, Hividu Shudra Kantavamani, Gelli Vakya Hudaya, Nirumagadalli, Mudagiyedudo, Tahira Bari, Desha Desha, Desha Deshigaradi, Karmar, Davisi, the Ajasa, Haskell, Chetak, ಎಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ ಆಚಾರದ ಹರಡುಗಳ ರಾಶಿ ವಿಚಾರದ ಸ್ರೋತ ಪದವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡಲಿದೆ ಪೌರುಷವ ನೂರು ಚೂರು ಮಾಡಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀನಿರುವೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಚಿಂತೆಯ ಆನಂದ ನೇತ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ನಿದ್ದೆ ಆಘಾತಗೆ ಏಪಿತ ಭಾರತದ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ But the meaning is completely gone. Meaning is completely gone in this translation because this is a sonnet which has particular rhyme scheme. Somewhat close to Shakespearean rhyme scheme. The last couplet, if Bengali there is no rhyme, this fellow has got rhyme, Shakespearean song. And the last in Tagore, the important thing is, unless you understand Tagore's philosophy, inform his work, not express philosophy, inform his work. Don't take a total purport of this verse. He says, in that heaven of you, wake me up, wake me up. There are several points in this work, Naivedya, which Tagore wrote in 291, long before India, but it is a patriotic song, it is not. This book is a series of prayers, prayer poems. There are about 100 of them. Which Tagore, dedicated to his father. And years after Tagore wrote this work, and his father had it read to him, he was so pleased with it. He gave him, some 850 rupees to get this book published. In all these poems, Tagore is expressing a spiritual philosophy which is unprecedented in Indian philosophical thought.
Yes, it seems to influence with Upanishads. There are some, the course Upanishads, Amrutasya Putra, that sloka is quoted again and again. But the spirit is very different. Because in Vedanta, most Indian spirituality, freedom is always away from out of the world. And Tagore rejects that kind of spirituality in work. For example, his famous play, Sannyasi, Nati Puja, and all these things. It's a kind of Advaita which sees freedom in the world, not from the world. And liberation through engagement in the world. No traditional Indian philosophy school was able to express this kind of vision, except one school, that is Kashmir Shaivism, which Tagore discovered from his Indian citizen. Like I said, this is the greatest philosophy that India produced. So he's praying not for his personal liberation anyway, praying for personal liberation in poem after poem rejected. It's for the liberation of every being. Even that poem, nobody is excluded from the celebration of this Mahamana. All castes, even the British, are welcome. So this kind of comprehensive philosophy, which is it reads through everything that Tagore wrote in all his poems, that many translators. So they think that Tagore is praying for his own elevation into a higher realm of experience, which is not the case in this poem. And in Gujarati, I am told there are two translations, and then this another translation that I told you about this. I don't have this Masti translated with these people with Rabindranath Tagore. Here gets the last line right, but most often what happens is if you use the Bengali words, they mix with the Prachina or the original text. It doesn't work in India. I just know how I said that because in Indian, different Indian languages permit different degrees of permutations or combinations of local words with Sanskrit words. The Gujarati translator, I'm told there are two translators, Umashankar Doshi, who's again not a very good translator, he knew some Bengali. And there is another translation by this person not very well known, Naveen Das Parik. And though this person didn't know the English, he gets the last of it right. He says, Swargama Tare Potane Hate Nirday Aghat Karine E Pita Bharat Ne Jaga. Awaken Bharat, not me. So with some of this that is right. But I don't know because Aghat, Tagore says, beat us till this happens. This Aghat in other languages, in Kannada, it means Aghat means accident, not beating. So one has to keep these things in mind and to get both the sense and sound right. I did my own translation of this poem. I'll read it and conclude with it because there's not time for anything else. I've already taken any time and I see Maharashtra is getting restless. I'm a theatre person because you always Deep silence. mindful about time. But we Not like literature people. definitely want to hear your voice and your translation. Chitta kelli digilayilla yakti deyasira gelli harivu mukta kili goreyin tanna manayanga hagayurugalli nela harivu akilla tundu madi gelli adeya aadinda adembudu homi harisidyo kese karma dharaya anavaratavo saviraje vitapthagarinda gelli hina acharada maradugaadiyೊಳಗೆ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ತಿಳಿಜಲ ಅಣಗನಂತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೂರು ಚೂರಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಪೌರುಷ
बीव सर्व कर्म चिंतन आनंदದ ಈಶಾ ನಿರ್ದಯ ಕೈಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಬನಿದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಏಳಿ ಸೇರಿ ಸೈ. Thank you so much. The musicality, the rhythm certainly resonates with me. Thank you, Professor Prakash. We move on to Bhavanji, please. बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं, बंद लोग हैं। माफ करना, मैं इतना टाइम नहीं, क्योंकि टाइम का भी कोई सिस्टम होता है। मैं टैगोर के बारे में बात कर रहा हूँ। टैगोर ऐसी शख्सियत है जो बहुत सी किस्म की बातें कर लेते थे। भाषा के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, मिथ के बारे में और भी कुछ बातें कर लेते। अगर हम सारी बातें वो दोहरानी शुरू कर दें तो हम टैगोर को पकड़ नहीं पाएंगे और टाइम भी इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब हम आज के जमाने में बात करते हैं तो राजस्थानी नए नए गए थे तो उनको पूछा टैगोर ने कि भाई कैसे आए हो? तो कहते जी कहानियाँ लिखता हूँ। किस ज़बान में कहानियाँ लिखते हो? जी मैं हिंदी में कहानियाँ लिखता हूँ। हिंदी में लिखते हो? आपकी ज़बान कौन सी है? आपकी मदर टंग कौन सी है? तो फलां जी ने कहा कि मदर टंग तो मेरी पंजाबी है। तो पंजाबी में क्यों नहीं लिखते? वो जी पंजाबी में तो लिख लूँ, लेकिन पंजाबी को लोग गंवारों की भाषा समझते हैं। मैं इसलिए हिंदी में कहानी कहते ठीक है। कहते एक बात सुनोगे? गुरु नानक ने एक आरती लिखी है और उसका ऐसे चलता है वो, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवलो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति। कैसी आरती हुई, भाव खंडना तेरी आरती। ये काफी सारा शब्द पूरा है, लेकिन मैं पूरा शब्द नहीं पढ़ रहा। इस आदमी ने इस तरह की आरती लिखी हो, इस तरह का शब्द लिखा हो, किसी भाषा में लिखा हो, उस भाषा को आप गंवारों की भाषा कहते हो। तो कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि उसके बाद बलराज जी ने पंजाबी में लिखना शुरू किया और उनकी दो किताबें तो बहुत मशहूर हैं, मेरा पाकिस्तानी सफरनामा और मेरा मलयाली सफरनामा। और वो किताबें और भी लिखी हैं उन्होंने, लेकिन वो सभी की सभी किताबें जो है वो कोर्सेज में लगी हुई हैं। ये टैगोर के हवाले से कि टैगोर ने बलराज जी को ये बात कही। बातें बहुत और भी हैं जो मैं कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक टैगोर ऐसे लोग थे, ऐसी शख्सियत थी जो जिनके लिए जो भाषा थी, जो हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी भाषाएं हैं, ये छोटी बात थी और आदमियत, इंसानियत ये बड़ी बात थी। तो एक बात उन्होंने कही
कि भाई शहादत, जो शहादत होती है वो आदमी में बहुत बड़ी चीज होती है। शहादत की बात करो, और उन्होंने, आप जानते हो जो लोग बंगाली लोग यहाँ बैठे हुए कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पर, उन्होंने बंदा बहादुर पर, और एक छोटी सी नज़्म जो उन्होंने भाई तारू सिंह के बारे में कही, वो मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नज़्म क्या थी? तो वो जमाने में ऐसी बात थी कि जो सिख थे, जो बाल रखते थे, उनके बाल काटने का, बाल रखने का जुर्माना जो था साहब ने रखा हुआ, वो ये था कि तेरा सिर ले लेना है। और एक दिन में 100 आदमी का सिर जो थे वो काटते थे। ये टैगोर को इन बातों का पता है, टैगोर को इन बातों का पता था, और उन्होंने भाई तारू सिंह के बारे में बात लिखी है। तारू सिंह की क्या बात थी? तारू सिंह की ये बात थी कि नवाब के सामने भी, नवाब कहने लगा यार मैं बात करता हूँ, ये सिर्फ कौन सी बात करते हैं, मैं बात करता हूँ। तो बात वो करने लगे, कहते भाई तेरे इतने खूबसूरत बाल हैं, अगर ये तुझे बाल दे दिए जाएं, अगर मैं ना काटूं ये बाल, तो कैसे रहेंगे? वो कहते ये तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो रहेंगे तो ठीक है। तो लेकिन वो एक बात है, आपको बाल काट के देने पड़ेंगे मुझे को। तारू सिंह ने क्या जवाब दिया, ये टैगोर ने अपनी कविता में लिखा हुआ है। टैगोर ने लिखा कि तारू सिंह ने कहा सिर्फ बाल नहीं, मैं और भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप क्या समझेंगे कि सिख जो होते हैं वो ऐसी कौम होते हैं जो बालों से लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस जमाने में ये घास खोदने वाली रंबियां होती थी, तो रंबी से सिर काटते थे जो आदमी उनका, जो दीन नहीं मानते थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे। तो पूछा गया क्यों भाई ये मानने को तैयार हो? वो कहता जी तारू सिंह ने कहा कि सिर्फ बाल नहीं, मैं अपना सर भी काट के आपको देने के लिए तैयार। मेरा कहने का मतलब ये है कि टैगोर ने जो लिखा है उसको करके दिखाया, और जो बंदा सिंह के बहादुर के बारे में वो भी ऐसी बात है। लेकिन मैं वो नज़्म जो सारी है वो 3-4 समय की नज़्म है, वो आपको सुनाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, शिव प्रकाश जी ने इन बंगाली में अपनी उनकी नज़्में सुनाई, वो हम बंगाली नहीं जानते इसलिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्वाद ये है कि जब ऐसे हम बैठते हैं, जब हम ऐसी महफिल लगाते हैं, तो हमें वो बात करनी चाहिए जो औरों को समझ आती हो और लोग भी समझे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बात है, टैगोर की बात करनी बहुत ही बढ़िया बात है। और खुशकिस्मती से मेरे दोस्त जो है, मेरी दोस्त जो रही हैं वो बंगला की बहुत बढ़िया तरह वो जानती थी, और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें, हम कभी टूर पर जाते थे तो टैगोर का जो गान था वो सुनाती थी, और इतना बढ़िया वो, और उसके साथ अर्थ भी बताती थी कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। ऐसी बातें जो हम जानते हैं।
मैं एक लेसन दूंगा सतीश साहब को कि हर साल एक कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें टैगोर की एक किताब हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो लेख हो उनके, चाहे वो कविता हो। अगर कविता हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये होना ठीक है कि साहित्य अकादमी जो है वो सारी ज़बानों की एक मजमूआ, लेकिन कोई ऐसी ज़बान भी है जिसमें टैगोर जैसे लोग पैदा हुए हैं, जो जिनके कलाम को हम लेकर कई कुछ बातें कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मोहन जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे और जवाब भी दिए, और इट्स अ वेरी गुड सजेशन दैट वी शुड टेक वन बुक एंड गो थ्रू अ डिटेल्ड discussion of the translations. प्रयाग शुक्ला जी, मैं आ रहा हूँ। जी मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज आ रही है जी एक बैठा बोलूँगा सुनो, इतना आनंद आता है। मेरे बारे में तो आप लोग जानते हो, टैगोर के बहुत सारे अनुवाद किए, जिनमें से गीतांजलि है, एक ये सुनो दीप शालिनी है किताब, एक निरुपमा करना मुझको क्षमा गीत भी है, गीतांजलि भी है। तो कहना ये चाहता हूँ, पहले थोड़ा सा अपना परिचय, एक और परिचय दिया, बहुत सुंदर परिचय दिया कृष्णा ने। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी हुई, 22 साल की उम्र तक मैं कलकत्ता रहा, जाता रहता जाना किसी में तो शादी के दिन। तो बचपन से ही टैगोर का गीत के लिए, गान के लिए वहाँ से आवृत्ति की होती है, और आप तमाम तरह के सुनाओगे, वह आपके कानों में पढ़ते ही पढ़ते। तो टैगोर मेरे कानों में बचपन से पढ़ना शुरू हुई। किशोरावस्था में आया तो बंगला सीखी, बंगला में उनको पढ़ने लगा। युवा हुआ तो मेरे पास एक गुटका था, गीतांजलि का, छोटा सा, बहुत छोटी सी गुटका, इसको हम लोग कहते हैं, वो साथ रख लिया। ये बहुत बाद में हुआ कि मैंने उनकी बात करनी शुरू की, क्योंकि नीयत नहीं होती। पर एक दिन क्या हुआ, इसकी थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अनुवाद का वो भी क्या अनुवाद करते क्यों। एक तो ये कि आपको किसी ने साइन कर दिया, जैसे मुझे अंतिम चर्च के लेखों का अनुवाद मैं करूँ, ये ने साइन किया, और मुझे लगा करने लायक काम है। करने लायक काम इसलिए अनुवाद में भी बात बोलूँगा, करने लायक काम इसलिए लगा कि वो चैलेंजिंग है कि बंकिम बाबू तो बंगला के जनक, हाँ जिनकी किताब पर मैं बात कर रहा हूँ, जो बात आप कह रहे थे मोहन जी जी अभी, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करा सकते। और अगर मैं उनकी भाषा को छोड़ दूंगा तो लोग मालूम नहीं आएगा, तो लगे बंकिम बाबू उनकी भाषा थी, इसमें कहीं अनुवाद में दिख नहीं रही। तो फिर एक बीच का रास्ता निकला कि वो उनकी भाषा की थोड़ी बहुत लगे और वो शब्द समझ सके। अनुवाद की एक और विशेषता मैं मानता हूँ कि अपनी भाषा को हम अनुवाद में ही समझते हैं, सचमुच में। ये उसकी तह क्या, इसकी लेयर्स क्या है एक शब्द में, क्योंकि जब हम लिखते हैं श्री प्रकाश में, तो जनरली यही होता है कि आप कविता लिख रहे हो, एक ड्राफ्ट करना, शायद दूसरा ड्राफ्ट करना, तीसरा भी बन सकता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं होगा। अनुवाद करते ही मेरा अनुभव रहा है, सिर्फ बंकिम बाबू का अनुवाद कर रहा था, जब तो सुनील जी से बात होती थी, कभी कभी सुनील गांगुली से, हमारे दोस्त थे, कई लोगों से बात होती थी, इसका क्या करें, इसको कैसे संभालें। तो
मेरे साथ गीतांजलि के अनुवाद करते समय भी अब एक दूसरे पक्ष पर आता हूँ। वो ये है कि हाँ, वो अनुवाद आप करते थे, कभी कभी बहुत इच्छा से मेरे अंदर बहुत गहरी इच्छा जागी थी गीतांजलि करने की। मैं गर्मी की छुट्टियों में मेरी पत्नी की बड़ी बहन रहती थी सोलन में, हिमाचल प्रदेश में। मेरे लिए लेकिन मैं थोड़ा समझ, क्योंकि देखिए ऐसा है महाराष्ट्र जी हम लोग रविंद्र प्रसंग में एक बार साथ रह चुके हैं, बड़ा पेस्टी हम हंगरी गए थे और बड़े तरह तरह के अनुभव उसके अलग थे। लेकिन वहाँ तो पूरा देश दुनिया भर के अनुवाद इकट्ठा हुए थे। पहला थोड़ा घड़ी भी देखता रहूँ, अभी 5:21 हुए, मेरे पास भी 5-7 मिनट बहुत से। तो वहाँ मैं सुबह सैर करता था। एक दिन गीतांजलि रखी पास में कोई एकांत में जाकर पढ़ेंगे। अब वो प्रकृति का वातावरण, मैंने गीतांजलि का गीत अनुवाद किया और बहुत आनंद आया। मुझे लगा गीतांजलि को इतनी दिनों से पढ़ रहा था, अब कुछ कुछ वो पकड़ में आ रही है इस परिवेश में। प्रकृति है, पहाड़ियाँ हैं और शांति है, चिड़िया हैं। धीरे धीरे करते हुए टैगोर के इस मर्म तक पहुंचा कि प्रकृति ही पालन सकता है। तो बड़ा है, और अभी आपको थोड़ा सा पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, तो लंबी है, पर थोड़ा से अंश पढ़ूंगा शुरू की और अंत के तो बात लेकिन शायद पूरी हो। तो ये है कि बहुत आनंद उठाया टैगोर करते हुए। और एक बार मैंने यहाँ सियारबाग में बंगला भाषियों के सभा में कह दिया, मैं टैगोर पर गुस्सा हूँ, बड़े शौक है, मैं टैगोर पर गुस्सा हूँ। और टैगोर का कहेंगे किस पर गुस्सा कर रहे हो? मैंने कहा गुस्सा इसलिए हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और छोड़ दिया। सच्चाई मैं देखिए अभी इससे दिया एक आध गीत सुना दूंगा आपको। तो सब छंद में है, ये बीटर में मैंने की। तो मैंने कहा कि भाई इसलिए गुस्सा हूँ कि दूसरे काम काज भी करने मुझे कुछ सूझे ही नहीं। मैं सुबह उठूँ तो गई पत्नी भी देखी गीत बिता ये गीत कुछ बैठे और कुछ कर रहे हैं। तो ये आनंद उठाया, और ये आनंद आप तभी उठाते हो जब आपको कविता में कुछ ऐसा मिलता है। और अगर उस भाषा को आप जानते हो, मेरा भाग्य की उस भाषा को जानता हूँ, और नहीं लेकिन जानता हूँ, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अनुवाद कर सकता हूँ, तो फिर ज़्यादा आनंद आता है। और ये देखिए ये भी एक चीज़ है लेकिन कि जो अनुवादों से भी अनुवाद हो रहे हैं, ये गलत कि आपने कितने अनुवाद मेरे गीतांजलि से किए, उन्होंने स्वीकार किए गुजराती में कहीं और किसी भाषा में कि मैं, और वो बताते रहे कि हमने यहाँ से किया, हमने हिंदी आती है, बंगाली आती है, इससे कर रहे हैं। बहरहाल तो मैं क्या करता हूँ, तो टैगोर जो है महासमुद्र है, महासमुद्र की लहरें वहाँ तक लेकिन तभी जो महासमुद्र है। और एक चीज़ की और याद करके फिर मैं कुछ सुनाऊंगा थोड़ा बहुत और फिर मैं विराम दूंगा। हिंदी में ये हम लोग का भाग्य है कि बहुत बड़े लेखकों ने टैगोर का अनुवाद किया, जिनमें से स्वयं दयाल द्विवेदी जी हैं, जिनको टैगोर बहुत आग्रह करते हैं। वो भी देखिए क्या लिखते हैं, टैगोर के बारे में सोचकर आचरण करता है। इतने लोगों से कोई आदमी कैसे जुड़ सकता है, इतने देशों के लोगों से, इतने लोगों से, हमारी हिंदी से। तो बलराज साहनी का जिक्र हो रहा था, देवेंद्र सत्यार्थी के प्रेमचंद के बेटे वो जाके उनसे मिलते थे, और खुद उनके पत्र जो सैकड़ों की संख्या में। बहरहाल हज़रत द्विवेदी ने अनुवाद किया, नाटकों किया और गे ने पूरा किया। बहरहाल उनका पत्र जो है इतनी सुंदर कहानी, उसका अनुवाद कई लोगों ने किया। तो शिवानी जी थी जो वहीं पर, उन्होंने कुछ लिखा टैगोर पर, फिर उस पर बताने बैठूंगा तो एक पूरी सूची हो जाएगी, इसलिए अब मैं महाराज जी के बहुत ज़्यादा तो
तो और अब तक को भी क्योंकि मैंने खुद कहा मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनाना भी चाहता हूँ। अभी तो बड़ी मुश्किल है कि आप सुनना भी चाहते हो, इच्छा होती है ना, ऐसी सभा कहाँ मिलती है। अरे राव साहब जिता देते हैं हम लोग की। तो शुरू में ये असल में ये गीत रविन्द्रनाथ का बहुत लोगों ने किया है कई भाषाओं में, और सबका ये कहना है कि उनका ऐसा गीत है जिसमें रविन्द्र भर में है। एक रात को गाँव के लोगों को लगता है कि महाराज भी समझे आप ईश्वर में, तो महाराज लोग इसी बात कर रहे हैं कि महाराज आए नहीं, महाराज क्यों नहीं आए, क्या होता है। तो ये शुरू की पंक्तियां पढ़ूंगा, फिर अंत में 2-3 पंक्तियां पढ़ूंगा। जब आई रात अंधेरी घिर, बीते दिन के सब काम काज, सोचा हमने या मन ही मन, कोई आएगा नहीं आज। सब द्वार ग्राम के बंद हुए, थी जैसे निश्चल खड़ी रात, तब भी था कोई बोल पड़ा, आएंगे देखो महाराज। फिर लगा कि कोई है बाहर, आवाज सुनी थी थक थक की, पर ज्यादातर का कहना था यह हवा अरे आई बहती। हम दीप बुझा अपने घर के, शैया पर चले गए सोने, पर तब भी कोई कहता था क्या पता तू ही हो अपनी। अब अंत में पहुंच जाता हूँ जहाँ वो झंझा आती है, और झंझा के बहाने अपनी रात परम सत्ता हो जाती है। जब बीत चली थी अर्धरात्रि, सोए थे गहरी निद्रा में, तब शब्द हुआ ऐसा जैसे हो काले मेघों का गर्जन। लो हमको करती सावधान, थर थर करती डोली धरती, तब भी कोई था बोल पड़ा, यह पथ पर पहियों का घर्षण। हम इतना कह निश्चिंत हुए, कुछ नहीं मेघ करते गर्जन। अब देखिए आती झंझा। दौड़ो दो सारे दीप बार, हो स्वागत आए हैं राजा, जो भी है जल्दी से लाओ, बज उठे आज बाजा गाजा। क्या भाग्य कठिन आती लज्जा, है कहाँ रे कोई सज्जा, है कहाँ यहाँ गाजा बाजा। तब कानों में गए धीरे से, थे गए अरे वे जन दो जन। छोड़ो युवा व्यर्थ न हो निष्क्रिय, तुम करो नहीं कोई क्रंदन, है तो रहने दो, इनसे ही कर लो अभ्यर्थन। खोलो खोलो सब बंद द्वार दो, अपने अपने शंख बजा, इस निश में घोर अंधेरे में चल कर आए घर के राजा। है वज्र बज रहा अंबर में, बिजली से कांपा अंधकार, लाहो व फटी चटाई ही, आंगन में दो उसको पसार। सहसा आए हैं लो राजा, हो झंझा पर जैसे सवार, करतार दुखों की रातों के, आए हैं देखो दुर्निवार। मुझे तो लगता है हमारे जो स्पीकर्स हैं उनको हम सुनते हैं, तो मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती पर कुछ समय की पाबंदी तो होती है। मैं राधा चक्रवर्ती से कहूँगी कि वो अपने आइडियाज रखें। Thank you. I have been requested to read first in Bangla and then in English, but I think I've already read Tagore in Bangla. So I will begin by reading the English section of an English translation of a famous poem by Tagore. The Bangla lines begin, Aji hote shoto borsho pore, ke tumi poricho boshi amar kobita khani. And I will read sections of the translation by Fakrul Alam, a translator from Bangladesh, whom I have co-edited with Tagore collection, Essential Tagore. 100 years from now. 100 years from now, who could you be reading my poem curiously 100 years from now? How can I transmit to you who are so far away a bit of the joy I feel this day?
However, if you keep your southern door ajar, sit by your window and look afar, view the horizon stretch endlessly and imagine this possibility, that one day, 100 years from now, excitement from some heaven above would flow, would strike your inmost heart and make it glow. That suddenly there could blow with the southern breeze an impulse from me that would make your soul sway. At a time 100 years away, 100 years from now, who will that new poet be? Let my spring song resound in your spring day. For a while, let my tune stay in the fluttering of your soul, the humming bees and murmuring in leaves. 100 years from now. In these lines, Rabindranath Tagore addresses his future leaders, imagining that his words will live on after his death. And I think we are hearing how his words have lived on in many languages. So he's imagining that his words will live on after his death and survive in the creations of future poets, resonating in the minds of unknown people in some other unknown time and place. Tagore's poem recognizes the power of words and also their mobility and mutability. We have also been hearing today how the poem original changes and transforms even while the spirit remains the same, but somehow it keeps evolving. So Tagore's poem recognizes the mobility and mutability of words. It also testifies to his conviction that language and literature can create connections across different histories, geographies, and ways of being. In Tagore's worldview, language and translation are not elements confined to the verbal and literary domain, but intrinsic to his entire way of looking at life. They express his vision of the interconnected of all things, and we have been hearing so much of that in the translations of poems and songs that we are hearing. And they challenge traditional hierarchies and are perceived as crucial to the formation of identities and the transcendence of boundaries. Because what is translation after all if it's not a crossing of different kinds of boundaries? His understanding of language and translation involves an inclusive syncretic vision, a democratizing impulse, an embracing of differences, and a utopian imagination. At the same time, his writings express an awareness of the limits of verbal expression as we understand it, demanding that we expand our understanding of conventional definitions of terms such as language and translation. Speaking of a synergy of languages, and we are hearing the synergy of languages here. But Tagore spoke of a synergy of languages, and he said, "The river that flows past my village can be used to conduct trade with foreign lands as well as to ferry people across from the village, because that coursing river has dynamic links with many others." So we can see how he thinks of an interconnected web of languages, and that really is how the multilingual scenario in our part of the world is. Tagore's creative practice celebrates language, yet also gestures at the limits of verbal expression. And for him, the concept of language has different connotations beyond the verbal and the textual. Language of melody, body language, including dance, the languages of visual, plastic, and performing arts, the language of nature, the world, the cosmos, and beyond that, the language of silence. Silences are very important in Tagore. In Tagore's thought and practice, language is closely tied to translation. And translation indeed is the medium through which his works were disseminated to the world beyond Bengal. His self-translations into English brought him the Nobel Prize and international repute as Asia's first Nobel laureate. It also
It was also through translation that he accessed multiple literatures from across the world, which had a profound influence on his breadth of vision. So here we're talking of Tagore's impact on other writers, but we have already been hearing, at least from one speaker, about how Tagore was influenced by Nanak, for example, or by Punjabi history and culture. We heard that, and that's just one instance of what we've been talking about today. But for Tagore, translation is not merely of functional or instrumental value. It represents some key aspects of his dynamic and inclusive worldview. So it was not just a practice, it was part of his philosophy. It is worth remembering that apart from English, he also addressed multiple other languages through his translations. When we talk of Tagore as a translator, we think of Gitanjali and a Nobel Prize. The fact is that he worked as a translator across multiple languages. In Rupantar, it's a volume published in 1965 after his death, we find approximately 140 Bengali translations from 23 poets writing in pre-modern Indian languages, including Sanskrit, Prakrit, Pali, Marathi, Punjabi, Maithili, and Hindi. As a schoolboy, he tried to translate from Shakespeare's Macbeth, and in later life, he translated a range of English poetry, including Keats and Robert Burns. This extraordinary versatility signals not always his linguistic virtuosity. In fact, Tagore was rather unorthodox. Sometimes he didn't know some of the source languages, but he still dared to translate. And he often relied on collaborations with others to help him with his translations. But more importantly, I think what we should receive from his practice as a translator across so many languages is his polyglot sensibility and respect for the multilingual ambience of the South Asian region. I think that should be inspirational in my view. This inclusiveness is part and parcel of his overall vision of the human world as an interconnected, diverse space. Tagore himself remained diffident about his command of English. He was unsure about the quality of his own English translations. Yet he continued to translate from English, from and into English, recognizing the instrumentality of the language in disseminating his work to the outer world. So he saw it as a way of reaching out, even if he wasn't sure of his grasp of the language. Today, a deeper, large-scale engagement with our own South Asian languages through translation is the need of the hour for us. Yet it is perhaps fair to say that English as the global language of power also is useful in placing our own literatures on the stage of world literature, so that they get read beyond the world that we inhabit. In this double move, Tagore's thought and practice offer an inspirational model. Tagore's own university, Vishwabharati, is imagined as bringing the world together in one nest, expressing a worldview that celebrated difference and yet recognized the linkages between all things. For such a worldview, translation provides the perfect paradigm. Seen in this sense, translation becomes not merely a linguistic exercise, but an active attempt to imagine into being a heterogeneous community of imagined readers. And we have a heterogeneous audience here as well, with different linguistic capacities. So translating in this way can be visionary or utopian. Translation as a crossing of borders and a space for meeting our others brings about a utopian recognition of this connectedness. And I'll end with a couple of lines from Gitanjali, because perhaps there is a clue to this worldview in these lines from Gitanjali, where Tagore says, "Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger." Thank you. Thank you very much, Radha. In my own comments on Tagore and translation, I will touch very briefly on the issue of self-translation. What were the challenges that Tagore himself was aware of when he decided to translate Gitanjali, for instance, and there I take off what Radha came to. And the second aspect I'd like to focus on is Tagore and the feminine, on which I have a book. What are the challenges that one faces
when there's a Tagore text which is very woman-centered. So on the first issue, I think Tagore was very aware of the problems of self-translation, which is why there is such a difference between the original Gitanjali and the English Gitanjali which won him the prize. The one that got the Nobel Prize had just a couple of poems from the original Bengali Gitanjali, and he added and modified and recreated a lot of his other material. So what were the principles of selection that he used? So the fact remains that although many people have exercised their reservations about the quality of English translation by Tagore, it was nevertheless the English translation which got him the worldwide fame. So I'm just going to read out a few lines from the Nobel Prize citation. Tagore was awarded, and I'm quoting, because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which with consummate skill he has made his poetic thought expressed in his own English words a part of the literature of the West. And Tagore, in his Nobel Prize acceptance speech, picks up some of these aspects of the globalization of his poetry, and he emphasized his desire to bridge disparate cultures. And I'm quoting Tagore, "I'm glad that I belong to this great time, this great age, and I'm glad that I've done some work to give expression to this great age when the East and the West are coming together. They've got their invitation to meet each other and join hands in building up a new civilization and a great culture of the future." So he was very aware of the bridge that translation makes, and the possibility of continuing to translate Tagore over time to make him more contemporary for all of us. We've witnessed several examples this evening. And Tagore himself, when that famous lyric with the English Gitanjali begins, "Thou hast made me endless, such is thy pleasure." But in Bengali, when you say, "Amare tumi oshish korecho, amoni lila toho," it can be translated in many other ways. So as so many of you have pointed out, that one can go into an infinite variety of translation possibilities, and Tagore was aware of it. Shiv Prakash ji mentioned, "Where the mind is without fear and the head is held high," as possibly the most quoted line. But when you go to the original, "Chitta jatho bhoy shunno," "Jetha bhoy shunno." Now, how aware was Tagore of the nuances that would change over time? But how many of us would dare to retranslate that? But I'm very glad that in languages other than English, it has been translated over and over again. Now, coming to my second point about Tagore and the feminine, when I was working on this book, I found some translations of the feminist so-called stories by Tagore, by Tagore himself, and many others by other writers. The issue is that Tagore was very, very aware of the point that men and women were equal. And much of his work was presenting the dignity and the agency of women well before his time. So when I started selecting material for this book, I tried to find some material which he had not translated and even others had not wanted to. And I'm just going to read a small sample of the translation I did of his story called Mohamaya. It's a difficult story to translate because it's about a Brahmin woman who falls in love with a person from another community. And when the brother spies her in association with this other man, takes it upon himself to get her married to a dying Brahmin man who's at the cremation ground almost. And this marriage takes place and she doesn't resist it. Of course, the man dies, so she's now become a widow. And she's compelled to sit on the pyre of the dead man. But as the pyre is burning, there is a sudden and a terrible storm. So as the water lashes onto the pyre, everybody else leaves. And somehow, it is to be assumed that she escapes the pyre.
And in that condition, she comes to the home of the man she loved and says, here I am. But she comes veiled and says, it's all right, I'm ready to live with you as your wife. And he says, he's very struck by this development, and he says, all right. But she says one promise, you're never going to ask me to lift my veil. Now when it comes to translation, this whole problem of veil becomes an issue. How does one do this? But the whole story is centered on the idea of the veil. And then he says, all right, I will not ever ask you to lift your veil. And then they are in a relationship, they are living together. And then one night, there is again a thunderstorm. But this is a beautiful thunderstorm and there's a great moon. And then this man can't resist himself and he goes into the room where Mohamaya is. So I'm just going to read this last few lines of the story as I have translated it. Rajiv entered Mohamaya's sleeping chamber as though driven by a dream. Mohamaya was asleep at that time. Rajiv stood near. He stooped and saw the moonlight had fallen on Mohamaya's face. But what a shock! What was this? Where was that face that he had known? The cruel tongue of the fire had scarred away a part of Mohamaya's left cheek and left a trace of its hunger. Rajiv was startled, and an inarticulate sound might also have escaped from him. Mohamaya woke up with a jolt and saw Rajiv. Immediately, she pulled her veil on and stood up, leaving the bed. Rajiv realized that now the bolt was about to smite. He fell to the ground, clutched her feet and said, forgive me. Mohamaya did not utter a word in response, and without looking back for a moment, made her way out of the room. She never again returned to Rajiv's house. Since then, she could not be found anywhere. The silent, wrathful flames of that unforgiving adieu left a prolonged scar on Rajiv's entire life. Thank you. We are open to questions, comments, observations on the session. Please feel free to address any of the speakers, but let's keep it as brief as possible so we can get in many voices. We have about 10 minutes. Please, Vandana. First of all, I congratulate all of you for giving us a very new dimension of Tagore's literature. In so many languages we have heard. I want to point out what Mahasi has said, that on Tagore's female characters, I want to point out, because as you said, he was really ahead of his time regarding his characterization of women. So in that context, I want to say, I think his most what is called strong character of Meena was street poetry. Somehow I like her, and she writes a letter leaving him from the stores of food he has this endless journey she was facing. And this particular story, translated and mentioned by Meenakshi, I think, it's awesome. I think awesome. And also I want to say another thing, if time permits, that Tagore was influenced by Multhali language. And in the beginning, he was inspired by Jogadev and Vidyapati. Vidyapati inspired him. And he wrote Hanushine Kodamori as a 16-year-old boy. Sea lion can be. Hanu is Adobe is the sun. And Hanushin Moshino means the lion. So nearly it can be translated in Hanushine Kodamori, and beautiful Radha Krishna episode with some of the translation as made by Radha Chakravarti herself has been it seems that it is written in Maithili and written in Bengali and that's what I want. एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रजबुली हाँ ब्रजबुली मैथिली पूरी नहीं पूरी नहीं थी, but some influence was there. I'm glad that you brought up that point.
And this, lines like Sajani Sajani Radhi Kalo Dekha Abahu Janiya is not pure Maithili or blood. But translating that is extremely difficult. Very difficult. As was Yes, said. Radha has done 2 or 3 words from that. So Ananda Radha, I think you did it. To bring the lyricism Yes. in line with the poetry and the language is particularly in Indian English, very, languages very still we can do it. Any more comments? जी मैं Please, बोलिए. नमस्कार सभी को। हमारे सभी वक्ताओं ने अपने अपने शायरी में अपने अपने अंदाज में कवि को रूप पर प्रकाश नीलम शर्मा अंशु और एजाज साहब ने भी एक बात कही कि नज़्मों का अनुवाद हो जाता है, कविताओं का अनुवाद सहज होता है, लेकिन गीतों का अनुवाद ज़रा कठिन होता है। और इन्होंने बंगाल में पढ़ी हूँ और साढ़े 26 सालों तक कलकत्ते में रही हूँ, 8 सालों से दिल्ली में। तो बंगाल वाले बहुत गर्व करते हैं कवि गुरु का और उनके गीतों पर। तो रावला कोठारी जी हुए हैं कलकत्ते से, उन्होंने उनके गीतों का अनुवाद किया बहुत पहले रविंद्र सुधा नाम से। उसके 2 खंड आए और जिसे बनारस साहब ने बाद में अपनी आवाज़ दी। उसके बाद इसके कई वर्जन आए, मतलब रविंद्र सुधा के या रविंद्र के गीतों के हिंदी में। उसके पहले रविंद्र गीत नहीं हुआ करते थे। तो मुझे लगता था कि हमारे बांग्ला वाले दोस्त बहुत गर्व करते हैं रविंद्र पर, चलिए इनको हिंदी का रविंद्र संगीत भी सुनवाया जाए। तो दाऊद कोठारी जी मतलब मंचीय प्रस्तुतियाँ देखते थे, स्टेज परफॉर्मेंस देखते थे। तो उन्हें मैंने अपने ऑफिस के एक कार्यक्रम में बुलवाया। मैंने उनसे कहा कि आप तो प्रोफेशनल हैं, आप जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट होगी इस वक्त मैं आपको नहीं पे कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको आने जाने का फेयर दूंगी, लेकिन मैं हमारे बांग्लाभाषी दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ कि हिंदी रविंद्र संगीत भी होता है। तो उन्होंने आधे घंटे की प्रस्तुति दी और मेरे सारे बंगाली कलीग्स ने उसे बहुत एप्रिशिएट किया। उसके बाद मैंने उनको दूसरा मौका दिया, इनकम टैक्स में बुलवाया। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि अब हमारा बजट काफ़ी है, आप जितनी डिमांड कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या जो आप चार्ज करते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने रविंद्र संगीत की प्रस्तुति हिंदी में की, वहाँ भी लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया। और कवि गुरु रविंद्रनाथ तो किसी भी विषय से छूटे नहीं हैं, उन्होंने हर विषय पर लिखा है जो कि आज भी प्रासंगिक है और उनके गीत फिल्मों में भी लिए गए हैं। मुझसे पहले की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और मेरे बाद की पीढ़ी 2 गीतों को मतलब कहाँ भुला सकती है। अभिमान का तेरे मेरे मिलन की ये रहना और याराना का छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। और एक और बहुत प्यारा सा गीत है युग पुरुष फिल्म का, पंछी उड़ा बंधन खुला। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मैं रेडियो से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे जब मौका मिला, जब रविंद्र जयंती के दिन मेरा प्रोग्राम हुआ, मैंने बांग्ला और हिंदी के गीतों को मिला करके हिंदी की झलक सुनवाते हुए बांग्ला की झलक सुनवाते हुए पूरा हिंदी का गाना सुनाया ताकि हमारे बांग्ला भाषी श्रोताओं को वो फर्क भी समझ में आए। और वही बात, थैंक यू। आप गाना भी गाती हैं? जी नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। Anyone else? I want to ask one question, if no one is asking. Let's see if there's anybody there. Then we can go back to you. The thing is that this particular famous poem of Tagore, in Bengali it is Chitto Jeta word, Jeta she. Chitto and she, both the meanings they have been written as mind. But so far as I think, Chitto should be either conscious or not. Chitto Jeta word, the mind is without fear and empty life. And then towards the end he writes, to that heaven of freedom, my father, let my tongue hear. My father represents who? Whom does it represent? Rabindranath Tagore as father. I want to ask you for that. No, I think that word you must say Neta. Neta or divine? Super conscious. Suppose what's the argument I have with poetry is the final Tagore completely secularized language of Bhakti. The God he is talking to is not talking, is self, Jivan Devata. This word comes at the Never end. he uses Bhagavan. I don't think ever. Jivan Devata, Dev, all these words he uses.
I know. So it is that. For example, in Kannada, if I put Neta, people remember the French Neta or Polish. But Neta doesn't work in Kannada, so you remember Isha. Isha is Lord. So, not Ishwar, Isha. What Isha Yoga? Isha. एक जगह प्रभु से कहता है Prabhu. एक के नमस्कार प्रभु एक के नमस्कार प्रभु. प्रभु आता है But never he writes Bhagwan. Never mentions भगवान रामकृष्ण Never. But there is a sense of a transcendent divinity. Yes, Transcendent more than that infinite. Yes, divinity. It's different from transcending divine of pure. It's closer to Upanishadic immanent divine, but it's not, it's inside the world, it's not outside the world. Thank you. Any other comments? Looking at Bhavan. I just Point out that film Street Buffalo is not made by Brunei Poetry. Yes. It is like an artwork. Please. Yeah, it was a great pleasure being here to have heard about a new dimension. I have not worked. See, I am a die-hard fan of Tagore, but I'm not a scholar on Tagore. But as a layman, it was a big pleasure for me to be here, to have heard about the other dimension of translation. So it was. I'm really happy. Thanks so much. Can I have one? Please. Since it has to do with translation, I just want to add, being a Bengali myself, I'm Mohuwa Chatterjee, so have read Tagore mostly in Bengali and some in other languages, including English. But having lived outside of Bengal for a while, and especially in Delhi, there's one thing that I have, one theme that I have encountered, which is not present here today, but which is actually what my question is, which is there are two ways of looking at it. People have said, I mean, beyond Bengalis, not so many of Indians, lay people, indulge in Tagore or know about Tagore or practice anything to do with Tagore or unless they are academic pursuits in their daily lives, like the Bengali people do, because it has become such. So what is the real reason? Now there are two theories that do the round. One is a critique of the Bengalis, saying that they have kept Tagore bound into the Bengali psyche, and the other is that he does not appeal to all. I mean, he has not percolated down to society in all other states or all other language groups in the country, where it would percolate down to society. I'm not sure I'm able to express myself properly, but I would really like to know from all you Tagore scholars or any one of you, which one of the theories is correct, or if at all it is true. बिल्कुल सही नहीं है जो आप कह रहे हो, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ भारतीय भाषाओं के बारे में और लोगों के बारे में, समाज के बारे में, हिंदी समाज के बारे में, टैगोर से ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं गया, बहुत कैलकुलेट। ये अब तो नई जनरेशन में ये हो रहा है कि अंग्रेजी के माध्यम से हो रही है, बहुत एक समय था लोगों को याद है, किसी भी घर में जाते थे, उन्हें बचपन की याद है, किशोरावस्था की याद है, कहीं भी जाए, किसी भी मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, कुछ रविंद्रनाथ का तो जरूर होता था। वाल्मीकि से मौका की वो बोला, वो जरूर, ये सारे अनुवाद ही बता रहे हैं। तो गुजराती की बात आती है, वहाँ झवरचंद मेघानी इतने लोग हैं, वहाँ तो गुजरात में तो ये हालत की समाज में भी कि बहुत सारे लोग, वैसे तो अगर आप बोल हमारा देश इतना बड़ा है, इतने लोग हैं कि उसमें कागजात भी नहीं उतरे अंदर तक, तो
दूसरी सच्चाई है। इसमें तो फिर ये है कि अपने अपने प्रदेशों के, जैसे हमारे उत्तर भारत में तुलसीदास, सूरदास, तो ये भी हुआ है। और महाराष्ट्र में तुकाराम, वो एक सच्चाई है। लेकिन इसके बीच में ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे आधुनिक समय में, बल्कि सदियों से, अगर कोई लेखक समाज के मध्यम धरा है विभिन्न प्रदेशों में, तो टैगोर। आप पहले प्लीज। अभी मैडम आपने बात कही और बहुत अच्छी बात कही, सही कही, लेकिन तो ये है कि जैसे हाफिज शिराजी फारसी के शायर हैं, उनको फारसी वाले जिस तरह से जानते हैं और जितना जानते हैं वो फारसी वाले जान सकते हैं। टैगोर क्योंकि बंगाली जुबान में है, तो जो भी जाना जा रहा है आज, ये जो कुछ हो रहा है यहाँ, इट कुड बी पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जितना फैलेगा, ट्रांसलेशन से सारे लिटरेचर ग्लोबलाइज होगा, ये उतना फैलेगा। लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशन तो रहेगी। जैसे पहले को उर्दू वाला या फारसी वाला जितना जानता है, बाकी सब सुनी हुई बातों की जो बाज़गश्त इको होती है, इज द क्लेमर ऑफ दैट थिंग, उसको सुनते हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन उतना फर्क नहीं पाते, तो उसकी इज्जत और मोहब्बत तो पैदा हो जाती है। ये भी एक नेचुरल चीज़ है। जैसा अभी आपने मैडम फिल्म के गीतों पर कहा, टैगोर की बहुत सी धुनों, केवल टैगोर कंपोजर भी थे, और जितने भी उनके गीत हैं उनको कंपोज उन्होंने खुद ही किया, सिवाय नेशनल एंथम के, जिसकी ट्यून जो है 1950 से पहले जो है फिल्म बनाई गई और वो उसमें आई। तो टैगोर खुद कंपोजर थे, इसीलिए मैंने शुरू में जो कहा था इस छोटी सी बात में, टैगोर के जो गीत है उनका संगीत भी उनका दिया हुआ। अब इंडियन जो फिल्म है, हिंदी फिल्म में जो है, उन पर टैगोर का असर बहुत ज़्यादा है, और अब से नहीं, बहुत पहले से। वही 2 साल की जो आपने कहा था, ये मशहूर हो गया। उसके पहले भी गीत हैं। हाँ, बहुत है। राही मतवाले गलत नाम कराया हुआ है, वो है, या एस.डी. बर्मन ने खासतौर पर, और सलीम चौधरी, इन लोगों ने बहुत लिया है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा संगीत लिया जाए, उनसे इंस्पायर होकर के उनके ट्यून्स जो है बहुत भी हैं। जैसे जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, देवान की फिल्म पर था। और इस तरह बहुत सारे गीत हैं, मैंने कहीं लिखा भी है, मुझे मैंने अपनी किताब में ढूंढा, वो रेफरेंस मिला नहीं, मैं इमीडिएटली आपको बता नहीं सकता। हाँ, बहुत है, और मैं फिल्मी एस्पेक्ट जो है उसके बारे में मैंने लिखा। ये आपका सवाल जो दिलचस्प था, आपका भी बहुत दिलचस्प था, उसका नेचुरल जवाब मेरा ख्याल ये हो सकता था जो मैंने किया। लेकिन ये फैल रहा है, और ये खुशनसीबी है हमारी। मैं इंडिया से बाहर 13 मुल्कों का मैंने सफर किया, जहाँ भी मैं बाहर गया, अगर इंडिया के किसी राइटर के बारे में ये कहा गया कि हम उनको जानते हैं, तो वो आज के राइटर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टैगोर के बारे में कहा। सीरिया में हम गए, वहाँ जो कहा वो टैगोर के बारे में सब जानते हैं, और वो बोलना चाहते हैं। आज का जो लिटरेचर चल रहा है, जिसमें रेप है, डकैती है, चोरी है, उसको उन लोगों ने कंडेम किया, लेकिन टैगोर के अदब को, उनकी शायरी को और उनके नॉवेल्स को आज भी लोग पसंद करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि एटर्नल जो है वो टैगोर में ज़्यादा पाया जाता था। ये भी हमारी एक चीज़ है, इंडिया की चीज़ है, जो लिटरेचर की। असल में भगवान जी के एक बात मुझे और कहनी है, वो संक्षेप में ये है, बंगला भाषियों को ठीक ही बराबर लगेगा, ये लगना चाहिए, क्योंकि टैगोर बहुत भाग्यशाली थे, उसको बंगला भाषा समाज। सही बात है। ये हमारी हिंदी में भी नहीं हुआ कि एक लेखक को पूरा समाज अपना ले और वो चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, कि बच्चे भी जाने, बच्चों के लिए उन्होंने जो लिखा है, फिर वो गाय इतने गए, आवृत्तियाँ होती रही, क्या क्या नहीं हुआ टैगोर के बिना वहाँ तो थिएटर संभव हुआ और कोई चीज़ संभव हुई। अब रविंद्र जी को हम लोगों ने सुना उनकी आवृत्ति करते हुए ऐसे कर्मियों को, तो जो बहुत लंबा है, अगर मैं बोलूँगा तो, लेकिन ये तो अपने अनुभव से जानता हूँ। और ठीक ही बंगला भाषियों को लगता है कि टैगोर को इतना जाना चाहिए, वो नहीं जानेंगे, क्योंकि उस तरह को नहीं जाने जाते।
कि जो पहला जानता है वो टैगोर को जाने का ही जानेगा, उस तरह से हिंदी भाषी नहीं जानेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे कोई नई बात नहीं कह रहा, हिंदी का इतना बड़ा काव्य आंदोलन छाया हुआ, इसमें निराला पंत महादेवी तो उनसे मिलती भी थी, तो ये सब लोग ना इंडियन लिटरेचर आप पाओगे कि बड़ा इंफ्लुएंस टैगोर का है सारी भारतीय भाषाओं में। विषय प्रकाश गंगा के बारे में बात कर ही रहे, किसी भाषा में भी आप देखो, हम लोग जब जब सुनते हैं हमारे बहुत सारे भारतीय लेखकों कवियों को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, मित्रता है, तो ये पता चलता है कि अगर कोई पहुंचा है तो टैगोर पहुंचता है। Thank you. I just want to add one more thing. Apart from direct influence, there is a lot of Indian influence. Because most of our great writers in Kannada have imbibed a lot of Tagore. And it's part of their education. If you want to write poetry or whatever, you should know your Tagore. And some of them knew Bengali. And Tagore's vision, for example, the exploration of nature, became a very important theme in the early 20th century literature. And some of the words that he used in the original have percolated into the lyrics written in Kannada. For example, Bengali, Antaramama Vikashita Koro Antaro Tarahe. The same padavali we get in a poem by Gurumpo, Antaratamani Guru He Atmatamo. So if you hadn't read Tagore, you would have got this line. So a poet's influence is more indirect according to me than direct. And somebody said Kalidasa, but Kalidasa's influence has come down to us through many other poets. Thank you very much for this insightful, perceptive and informative session. All the speakers have opened up new dimensions, and I'm really grateful to Sahitya Akademi for bringing all of us together, and the wonderful audience. Thank you so much for being not only good listeners and thinkers, but also expressing your views on the subject. Over to you, Dr. Ram. Krishnaji. Well, spelling out the collective mind here, we really do not want this to end the session of such a lyrical intensity. So we will continue certainly, but over a cup of tea. I invite all of you to have a cup of tea together. Thank you all. I heartily thank all the creative speakers and Malashri Lalji for moderating this session so well. Thanks a lot.